माइथोलॉजी की जब बात करते हैं तो ये पहले बहुत आसान माना जाता था, लेकिन अब इसके साथ खतरा ज़्यादा है क्योंकि ज़रा सी चूक और आपके हाथ जल जाएंगे। जिस फील के साथ हम लोग इससे कनेक्ट हुए कि ये हनुमान की फिल्म है, लेकिन ये आप बता रहे हैं ये हनुमान की फिल्म है। Whenever you stand for dharma, whenever you stand for righteousness, there is always this one divine power who is Hanuman ji, he will be standing behind you. आपने स्पाइडरमैन देखा, बैटमैन देखा, आयरन मैन देखा, अब हनुमान देखने वाले हैं। हिंदुस्तान में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, बहुत कम फिल्में होती हैं जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ इतिहास के कुछ पन्नों का साक्षी भी बनाती हैं, कंप्लीट पैकेज के तौर पर आती हैं। माइथोलॉजी की जब बात करते हैं तो ये पहले बहुत आसान माना जाता था, लेकिन अब इसके साथ खतरा ज़्यादा है क्योंकि ज़रा सी चूक और आपके हाथ जल जाएंगे। ये पहले हम कई फिल्मों के साथ देख चुके हैं। इसलिए ऐसे किरदार उठाना जो आस्था का प्रतीक रहे हैं वो भी आसान नहीं होता। उसके साथ आपको एंटरटेन करना है, उसके साथ आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ध्यान देना है। कुल मिलाकर के प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन ये तमाम चैलेंजेस एक साथ लेकर के आए हैं एक नई डेफिनेशन के साथ, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि हनुमान है। तो ये हनुमान क्यों है और हनुमान क्यों नहीं है, ये हमें बताएंगे जिन्होंने इस किरदार को रचा है। हमारे साथ है मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट डायरेक्टर इन प्रेजेंट डेज प्रशांत वर्मा। प्रशांत, स्वागत है आपका। और हमारे साथ है तेजा सज्जा। तेजा सज्जा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं कि ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि ये तेजा को आप पहली बार देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप उनको इंदिरा द टाइगर में देख चुके हैं। चिरंजीवी के बचपन का किरदार जिस बच्चे ने निभाया था वो बच्चा बड़ा हो गया है और हमारे साथ है। और मतलब मैंने आपको बचपन में भी देखा और अब भी देख रही हूँ, मैं कितनी बड़ी हूँ, मतलब मैं ये सोच रही हूँ। I have to cut this bit and share it back in Telugu states. I've never imagined people in across nation know my. And you're like actor of generations. That's a very big word. Thank you, ma'am. So प्रशांत, सबसे पहले कि जब हमने इसका ट्रेलर देखा या टीजर देखा तो जिस फील के साथ हम लोग इससे कनेक्ट हुए कि ये हनुमान की फिल्म है, लेकिन ये आप बता रहे हैं ये हनुमान की फिल्म है। हनुमान कैसे बने, या हनुमान में हनुमान वाला क्या है, ये बताइए। This is basically a story of a very normal सीधा साधा underdog लड़का का कहानी है। So whenever there is something bad happens, like whenever there is अधर्म जो होने वाला है, whenever you stand for dharma, whenever you stand for righteousness, there is always this one divine power who is Hanuman ji, he will be standing behind you, he will support you, so by giving powers to you. So that is the main theme of the film. So basically it's a superhero film, एक देसी सुपरहीरो फिल्म है। आपने स्पाइडरमैन देखा, बैटमैन देखा, आयरन मैन देखा, अब हनुमान देखने वाले हैं। हनुमान जी का जो शक्तियाँ हैं वो एक सीधा साधा हनुमंतु को आता है और वो हनुमान बन जाता है। So that's the main difference between हनुमान जी and हनुमान। तो तेजा, ऑफिशियली पहली फिल्म जब आप बड़े होकर के लोगों के सामने आए हैं स्क्रीन पर, इतनी पावरफुल आपके हाथ में आई है, मतलब जनरली तो हाँ, मतलब क्योंकि ये पैन इंडिया फिल्म के तौर पे प्रमोट की जा रही है, तो कितना चैलेंजिंग था ये एक सुपर हीरो के तौर पर भी आपको इस फिल्म में खुद को प्रूव करना है, और दूसरा जो कहानी है माइथोलॉजी बेस्ड कैरेक्टर्स पर जब कहानी बनती है तो उन कैरेक्टर्स को प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसा था एक्सपीरियंस? Ma'am, first of all, we would like to call it our Indian itihasas and not mythology. And our film is not entirely about our Indian itihasas, ma'am. It has a mixture of. Is it okay if I talk in English? Yes. Okay. It has a mixture of itihasas with the superhero element and the regular social story that you would watch. So the story is predominantly about a young boy, and as Prashant has said, he gets blessed with the powers of Lord Hanuman. And he's not playing any of the characters in Itihasa. It is about a regular boy like anybody else. So if he gets blessed with the powers of Lord Hanuman, that's the story about. So
To start with, back in Telugu films, this is my 5th film. So it wasn't very difficult for me to do a Telugu film, to play a village boy. It is a fictional world. A world was built by Prashant garu. It's called Anjanadri, and it will be beautiful, like you've seen the teasers and trailers. So when we started the project, we were making only we started the project very small. We wanted to make it in our regional language only. So it wasn't very difficult for me to play a village boy, because that is quite easy for us in Telugu cinema to play that. So we were doing it honestly. Whatever he has written, we were being very honest to the character and doing it. That is it. We didn't think about too much. We didn't want to. But does it make it more challenging to the character? Because when we say it's a pan-India movie, मतलब So we क्या didn't- उससे Huh, what's the we difference? didn't, What that- different does that it is bring what to the I'm movie? We coming didn't try there. to be a Yes. pan I'm Indian coming there. film. We didn't try to be a pan-India film. We were sticking to the original roots and the culture that and what he has written initially, and we were making the film. Once the content started coming out, we've started receiving love across nations. So that was very surprising for us. We didn't even understand, because we are two boys from Hyderabad just trying to do something big. That is it. We don't even have big budgets. We've made this film in a very compact, modest budget, and we've never even imagined this. Sitting here in Delhi today in front of you and releasing our film in Hindi, it is just because of all the reception and love that people are giving us across the nation. We didn't try to add any actors from North India to make it a pan-Indian film. We didn't try to add any elements that we think North Indian people will like. We were just very true to what the story that we wanted to tell. I think since the But new Prashant, is it the timing also? कहते हैं कि जब एक चीज़ सही वक्त पे नॉक करती है, क्योंकि इस फिल्म की जो फील बनी, आई कैन लाइक पर्सनली फील दिस, आदि पुरुष, हालांकि आपने कहा अपने अर्लियर इंटरव्यूज में कि आप कंपैरिजन की बात नहीं करते, लेकिन हम यहाँ सिचुएशनल कंपैरिजन कर रहे हैं. आदि पुरुष की डिबैकल के बाद जस्ट कुछ ही वक्त के बाद हमने देखा हनुमान का टीजर आया, और लोगों ने वो एक कंपैरिजन शुरू कर दिया कि अरे आप देखिए इतनी महंगी फिल्म में आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत खूबसूरत हो सकती थी, डिज़ास्टर कर दिया. लेकिन एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका बजट इस फिल्म के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके VFX कितने अच्छे हैं, कितनी क्लोज टू लाइफ या क्लोज टू द स्टोरी विच दे वांट टू टेल लगती है. तो वाज दैट द राइट टाइम? मुझे लगता है क्योंकि तभी से लोग लगातार इस फिल्म के बारे में कनेक्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस मूवी. और अब जब रिलीज भी हो रही है तो हम देख रहे हैं कि वो जो एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर के, वो जो कनेक्शन है वो लगातार बना हुआ है. nothing was intentional, ma'am. We were trying to just make our film, but we didn't try to plan it in such a way where if we release, actually we wanted to release the We wanted teaser. to release the teaser release our teaser before on the same day Adipurush. as Yeah, on the same day as Adipurush trailer. Then they've announced their teaser. So then we said, we literally said, I tweeted saying that Hanuman will wait for Ram. So we waited so that they can, we didn't want to release it on the same day. So It's such a huge film. We won't even be yeah, seen when some we big thought content we'll, is in out there. comparison, probably will look very, very tiny. But yeah, I mean like. बट आई थिंक अभी साउथ की ही फिल्मों ने ये वाला जो हम कह सकते हैं मुगालता है, मिसकंसेप्शन जो वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग में थी, उसको तोड़ा है. एंड आई कैन प्राउडली से कि इट हैज़ कम फ्रॉम साउथ. कांतारा को आप देख लीजिए, बाहुबली, यस देख लीजिए आप. इनफैक्ट अभी हम लोग 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत KGF से हुई. तो ये कि बहुत बड़े स्टार्स होंगे, बहुत बड़ा बजट होगा, तब जाके कि आपकी फिल्म एक सर्टेन क्लब में शामिल होगी, ऐसा नहीं है. अब अगर फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, आपने कहानी को ईमानदारी से बताया है, तो मुझे लगता है लोगों को फिल्म पसंद आती है. Exactly, ma'am. We've been, as we speak, we have opened our premieres. Like we are releasing the film on 12th. But since a lot of other big stars films are coming on the same time, so we thought we will release, and there was a lot of buzz for the project, so we opened premiere, like 1-2 theaters we just opened. And trust me, I mean, like they are filling in 15 minutes, the entire theaters are getting booked. Like back in Telugu states, usually a theater is about 1200 to 1500 capacity. It's not like small theaters like now. It's 1200, like very big 1500 theaters. capacity Big time. theaters are done in 15 minutes. We've And started it's- this pre-bookings at 11 o'clock in the morning.
by now, by 3 o'clock, we've closed about 100 full screens. 100 full screens. That's great. They are Congratulations. full now. That's nice. And the distributors are calling me and saying, sir, this last time this happened for RRR. Like, you know, then after that, I think this wow. is the film. Now you see, आपने मतलब इतने कम में कौन सी फिल्म के साथ नहीं मैम, मतलब विनोद ये ना हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. not even comparison, ma'am. Honestly, we are nowhere near to them also. I think it is a very small film that we have made, but honestly, genuinely, we have made the film, ma'am. It is the audience, the Indian audience, definitely, if they like something, if they are And they're emotionally mad about connected it. to Yes, something, yes. It's emotion. it is. Yes. I think it's But, emotion. हम एक और सिचुएशन की बात करेंगे जिसे आप बोलिए। इग्नोर नहीं कर सकते हैं. 10 दिन के बाद में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है और 10 दिन पहले और ये कहते हैं कि मतलब रामदूत पहले आते हैं देखने के लिए कि चीजें सही है कि नहीं बहुत है. अच्छा बात. Very well put, yeah. Very well put. तो रामदूत आ रहे हैं. हाँ. तो ये कहीं ना कहीं तो फिल्म रिलीज से पहले क्योंकि आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो कहीं था ये दिमाग में कि नहीं मैम, when we announced the film, तब तक Rammandir डेट नहीं प्राण अनाउंस हुई प्रतिष्ठा थी. date was not announced. अच्छा. हाँ. तो फिर आपको ये लगा जब अनाउंस हुई कि आपका जैकपॉट लग गया है? नहीं हमको लगा there's a divine intervention that is Not supporting. jackpot, like already we have hit enough jackpots with the teaser, trailer. I think we are but already. now the buzz और एक जो एक्साइटमेंट है क्योंकि मैंने देखा कि अब ज्यादातर लोग इस फिल्म की बात कर रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह है कि इस वक्त जो पूरे इंडिया में जो एक सेंटिमेंट बना हुआ है वो गजब का है. No, I think we just thought it's very nice that it is happening around the same time. Nothing more than that. लेकिन इसकी एक टिकट का 5 रुपए राम मंदिर के लिए देने की बात कही चिरंजीवी ने भी बोला. On तो every ticket. क्या है उसका डिटेल? But we. Producer didn't announce it directly, but he was doing it on his personal capacity. Didn't announce it in the sense he didn't want to make it public. He was doing it Until as we his do it. sentiment. Yes, yes, yes. He's a very he follows all rituals, religion, everything. Today also he's in Mala. He's in the Ayappa Mala. He's in That's Ayappa great. Mala. So he wanted मतलब to. इसके लिए वैसे साउथ के मेकर्स की, फिल्म स्टार्स की तारीफ भी होती है कि दे आर वेरी ट्रू टू द कल्चर. सो दैट्स वेरी आई थिंक So we इट्स just, ग्रेट अबाउट इट. you know, we happened to say it to Chiranjeevi sir, and Chiranjeevi sir got excited, and you know, Yes. he has announced it. Yeah. There's definitely some power that is guiding us through this. Otherwise, it is not possible for us to do something to receive this love. You're telling us that everybody is talking, everybody you know of are talking about Hanuman. We don't even know that one. We are sitting back in Hyderabad trying to make our film look as good as possible in the very minimal resources that we have. We don't even know what is going on around. So just when somebody like Rivas Garu, who is presenting this film in Hindi for Hindi, when somebody like him or somebody who is presenting in Kannada comes and tells us that people are excited, we are very happy about it. So just out of this happened because of some superpower that's helping us. So out of our thankfulness, my producer wanted to do that. Yeah. दैट्स ग्रेट. प्रशांत, हर फिल्म आप बहुत ईमानदारी से या फिर कोई भी फिल्म मेकर अपनी जो भी उसकी बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी है और ईमानदारी है उसके साथ बनाता है. अभी ये जो एक नई नई टर्म्स आ गई हैं कि फिल्म 1000 करोड़ का क्लब है, 500 करोड़ का क्लब है, उसमें शामिल होगी तब वो सक्सेसफुल फिल्म की डेफिनेशन में फॉल करेगी या नहीं करेगी. ये सब चीज़ें भले ही आप नहीं सोचे, भले ही आप कहें कि मेरी आर्ट, मेरी फिल्म इन सब चीज़ों से परे है, क्या ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर क्रिएट करती हैं? Of course. I mean, like automatically forget about the films, ma'am. Even if you want to decide which is the interview which is more successful, like, you know, we are doing one interview, we will do more interviews now. Do you really look at the content or do you look at the views on the YouTube? So it's come to that. It's very diplomatic director you have. It's come to that. So you know, we just need to follow the trend, but you know, we will. It doesn't mean that you know you will do this interview for the views. You will do it because you want to do it. The views will follow. So similarly, the money is also that. You know, we do it out of passion. So if we get into that clubs, whatever the so-called clubs that you are saying, we will get to make more films. So end of the day, every filmmaker is a filmmaker first. Then the business and all that aspects will come. Yeah. One thing I would like to add to this,
only when, as you said, only when we attain that kind of positions in the clubs or whatever, that is when we will be Taken seriously, probably. respected in the first place, or will be given more opportunities, or even for that matter attention from the media also will happen, and that will directly be beneficial for our film to reach to more audience. So it is all interlinked, ma'am. Yeah. सो अब आपका ये पहला हिंदी में एक ऐसा फिल्म है जिसको पूरे इंडिया में एक साथ- Leaving Indra the Tiger. इंदिरा टाइगर का यू नो तो पहली बार आपको मतलब पूरे इंडिया में अभी आपको लोग जो है देखने जा रहे हैं। इसके बाद क्या है आपका कि बॉलीवुड की तरफ भी कुछ झुकाव, या कभी आपने सोचा कि आप हिंदी फिल्मों पर भी फोकस करेंगे? अभी 5 फिल्म साउथ की हो Ma'am, गई है। I'll tell you very honestly, I don't think I'm या अभी नहीं बोलना प्रशांत के सामने आपको ऐसा। I don't think I'm that good looking as all And the... let people I'll tell you. decide. No, I'll tell you. Why are you No, deciding it? I am not that good looking like the Bollywood heroes that are today. नहीं अभी I एक सेकंड don't have a- ये मिसकंसेप्शन अभी पिछले 2-3 साल में लोगों ने अच्छे से क्लियर कर Ma'am, दी you है। didn't let me complete. गुड लुकिंग हीरोज की फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही हैं, बिल्कुल नहीं चली हैं, कोई उन्हें देखने नहीं गया। सो इफ इट्स अ गुड स्टोरी, गुड एक्टिंग, I think you're gonna do good on box office. There is the answer, ma'am. Good story, good acting, And you want and there is no language barrier. We are making films in Telugu, and definitely, just like they are encouraging Hanuman today to watch in Hindi. But one thing, ma'am, we have taken utmost. We didn't want to make it look like a dubbing film at all. Yeah, We have yeah. taken utmost care. The singers in this film are. Actually, for Telugu, we worked with very fresh singers because we couldn't afford big ones. But when Rivad sir has taken the project into Hindi, and he's started working on the project and to make it as Hindi film as it is a Telugu film. So he hired the best writers. He hired the writer who wrote RRR. And so Nidhi Chauhan ma'am has sung a song. Shankar Mahadevan sir has sung the title song. And then Kailash Kherji. All these big singers have come on board. So this will probably, I hope, I don't know much about Hindi cinema, but I'm sure this will look like almost like a Hindi cinema for you guys. Absolutely, and that's what we wanted. In fact, Yeah. पीछे तमाम ऐसी ही फिल्में ज्यादातर हिंदी ऑडियंस ने देखी हैं जो ज्यादातर साउथ की थी, और उन्होंने उनको कंपैरेटिवली ज्यादा एंटरटेन किया है। जिस तरह से हम अच्छी कहानी की ही बात कर रहे थे जो आपको दिखनी चाहिए, तो उम्मीद है कि वो इसमें दिखेगी, क्योंकि अब तक इसके टीजर ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग रहे हैं, लोगों को बेहद पसंद आए हैं। और आपसे बात करके भी हमें ये क्लैरिटी मिल गई है कि पूरी ईमानदार इंटेंशन के साथ इस फिल्म को आप लोगों ने बनाया है, और उसी तरीके से पसंद आए लोगों को। वी रियली वांट दिस। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस इस फिल्म के लिए, एंड वी रियली वांट टू डू हनुमान वेरी बेस्ट ऑन द बॉक्स ऑफिस। Thank you so Thank you. much. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच।